हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्रीज फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटीज problem set 1. From that problem set we are going to study some selected sums. In this chapter similarity we studied 4 videos of this basics and 4 videos of practice sets. Now let us see problem set 1. In problem set 1 the fifth sum is given. Here the quadrilateral PQRS is given. This QS is the diagonal, PM is perpendicular to QS, NR is also perpendicular to QS, and what is given? This PM is 10, this PM is equal to 10. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका 100, ये नीचे का QRS दिया है इसका 110, एंड देन फाइंड NR. तो हम लोग को NR फाइंड करना है. इफ यू ऑब्जर्व द फिगर, in this figure this triangle PQS having the base QS or PM height. QRS में क्या है? QS is the base and NR is the height. Means these are the triangles of equal bases. So how to write triangle PQS and triangle QRS having common base QS. QS is the common base, and if base is common then ratio of their area, therefore area of triangle PQS divided by area of triangle QRS means ratio of their areas is equal to ratio of their corresponding heights, मतलब PM upon NR. तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं ट्राइंगल्स ऑफ equal bases. We use that property. If bases are equal then the ratio of their areas is equal to ratio of their corresponding heights. तो heights के बराबर हम लोगों ने रेशियो दिखाया. Now substitute the value. PRS का वैल्यू 100, PQS area is 110, ये 0 कैंसिल कर दो. PM is given 10 divided by NR, तो 10 into NR क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया is equal to this 11 into 10. तो NR is equal to this 11 multiplied by 10 और divided by this 10, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया. NR is equal to 11 centimeter. So we get the value of this NR. So in this way, easily using the property of equal bases, triangles of equal bases, the ratio of areas of triangles having equal bases is equal to ratio of their corresponding heights. ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज करके हम लोग यहाँ पे NR निकाल सकते हैं. Now let us see the sixth sum. Triangle MNT सिमिलर ट्राइंगल QRS. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं. ट्राइंगल MNT एंड ट्राइंगल QRS आर सिमिलर and altitudes are given. Altitudes means height of that triangles. Altitude is also known as height. So length of the altitude drawn from the point T, यानी altitude of this triangle, let it be H1. H1 is equal to 5 units and H2 means altitude of this triangle is 9. Then find area of triangle MNT divided by area of triangle QRS. ये हम लोग को फाइंड करना है. Here you know the theorem of areas of similar triangles. So what is that theorem? If triangle ABC similar triangle PQR, अगर ये दो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर लेते हैं then by that theorem area of triangle ABC, area of triangle PQR, the ratio of their areas, if two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to
AB square upon PQ square means we can write S1 square side square S2 square. यानी according to that theorem of areas of similar triangles, what we can write? Ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of the squares of their corresponding sides is equal to ratio of the squares of their medians m1 m2 square, ratio of the squares of their heights यानी altitudes and ratio of the squares of their perimeters. तो ये theorem है, that is the corollary of that theorem of areas of similar triangle. तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी यूज करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ दीज आर सिमिलर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर हाइट्स यानी अल्टीट्यूड्स. सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टीज, सो हियर सो ट्राइंगल MNT सिमिलर ट्राइंगल QRS, ये दोनों सिमिलर दिया है एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT divided by area of triangle QRS is equal to H1 square upon H2 square. Here we can write the reason, theorem of areas of similar triangles. So this is the theorem. Now substitute the values. H1 square means 5 square divided by this 9 square. So we get area of triangle MNT divided by area of triangle QRS is equal to H1 square means 25 by 81. So in this way we can easily find the ratio of their areas using this theorem. Let us see seventh sum from problem set 1. In this seventh sum, in triangle ABC, this DE parallel AB is given, then ADC and BEC, then AD5 DC3 और BC दिया है 6.4. हम लोग को निकालना है BE. तो हम लोगों ने क्या किया, लेट दैट BE इज इक्वल टू x. अगर हम लोग BEx लेते हैं, ये टोटल हो गया 6.4, ये टोटल लेंथ है 6.4. अगर ये x लिया तो ये क्या है 6.4 माइनस दिस x. सो लेट BE जो हम लोग को निकालना है वो, सो लेट BE इज इक्वल टू x. देन अगर BE x है देन EC इज इक्वल टू, देयरफॉर EC इज इक्वल टू दिस BC माइनस BE. सो वी गेट 6.4 माइनस x. नाउ सेकेंड स्टेप, इन ट्राइंगल ABC what is given? Segment DE parallel this side AC, and you know whenever a line is parallel to side, by basic proportionality theorem, what we can write, AD upon DC is equal to BE upon EC. These ratios are equal and therefore AD by DC is equal to BE by EC. Reason, basic proportionality theorem, by basic proportionality theorem. So here substitute the values. 5 by 3 is equal to x divided by 6.4 minus x. So by cross multiplication, 3 into x is 3x is equal to 5 into this 6.4 minus x. Now open the bracket. Therefore 3x is equal to, here this is 32, 5 6 are 30, 5 4 are 20 and minus this 5x. ये जो 5x है ये साइड में लेके आओ, that becomes plus 5x. ये 5x इधर आया तो plus 5x is equal to 32. तो 5 plus 3 at x is equal to 32, यानी x is equal to 32 divided by 8
तो x इज इक्वल टू 4, बट x इज BE, हम लोगों ने क्या लिया, BE इज इक्वल टू x, देयरफॉर BE इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, जो हम लोग को फाइंड करना था. सो इन दिस वे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ओनली, वी गेट our answer in 7th sum. Now that 8, 9 and 10 are deleted from your syllabus this year, now let us see 11th sum. Now let us see 11th sum from problem set 1. Here quadrilateral ABCD is given and diagonal AC and BD intersect at P. So what is given? Write the given thing first. Given and what we have to prove. In quadrilateral ABCD, what is given? Segment AD parallel segment BC, then diagonals AC and BD intersect at P. Then what we have to prove? Then to prove so here what we have to prove, AP upon PD is equal to PC upon BP, that we have to prove. So let us see the proof. Here if we consider these two triangles, ये जो first one, ये second one, triangle APD and triangle CPB, तो इसमें ये एक पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ए जो पेयर है ये अल्टरनेट एंगल, बिकॉज AD पैरेलल BC और BD अगर हम लोग ट्रांसवर्सल लेते हैं, देन एंगल ADP और CBP दिस आर अल्टरनेट एंगल्स, और ए एक पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो बाय AA टेस्ट दैट टू ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर. सो फर्स्ट वी हैव टू शो दिस ट्रायंगल APD. सो फर्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल APD and triangle CPB, triangle APD and CPB, angle APD is congruent to angle CPB. ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. This is the pair of vertically opposite angles. Second pair, angle ADP is congruent to angle CBP. These are the alternate angles formed by AD parallel BC and BD transversal. So these are the alternate angles formed by these lines, and therefore ये दो एंगल अगर congruent हो गया, then triangle APD is similar triangle CPB by AA test of similarity. These triangles become similar by this test. Therefore, their corresponding sides, when two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. यानी AP by PC. AP ये पहला पेयर लिया हम लोगों ने, AP by PC. Therefore, AP upon PC is equal to, second पेयर लिया, this PD upon BP. PD upon BP, और रीजन लिखा
corresponding sides of similar triangles. When two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. Now in 9th standard, we studied ratio and proportion. In ratio and proportion, one property is there. If two ratios are equal, अगर दो रेशो इक्वल है तो ये जो न्यूमैरेटर बोलते हैं हम लोग, यानी ऊपर का टर्म, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, और ये डिनोमिनेटर में जो सेकेंड टर्म बोलते हैं उसको. If two ratios are equal, then ratio of the first terms is equal to ratio of the second terms. That property is known as alternando. तो ratio of the numerators is equal to ratio of the denominators. ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, so we get AP upon PD is equal to ratio of the denominators, यानी PC upon BP is proved. Here the property is by alternando. So this property is known as alternando property. So using that alternando, we get our result. So in this way, in 11th sum, we can prove this AP upon PD is equal to PC upon BP. Now let us see 12th sum from problem set 1. Here triangle ABC is given, and in triangle ABC XY parallel AC. So here in figure XY parallel AC, if 2AX is equal to 3BX and XY is 9, then find AC. Here it is the activity based question. We have to complete the activity and find AC. So to complete the activity to find AC. So here already answer is given, we have to fill in the blanks. So first one, the answer is here, this relation is given, 2AX is equal to 3BX. Here we can write given. This is activity because already answers are given. So AX, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AX लिखा और ये BX A बाजू में आ गया, is equal to, here we have to fill up. तो यहां पे क्या आएगा देखो, AX, ये BX लेफ्ट में आ गया, यहां पे क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय दिस 2, तो फर्स्ट फिलअप आ गया 3/2. नाउ बाय कंपोनेंडो, कंपोनेंडो मतलब इसमें डिनोमिनेटर ऐड करना है, डिनोमिनेटर रिमेन्स एज बट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. सो बाय कंपोनेंडो नेक्स्ट स्टेप है AX प्लस BX डिवाइडेड बाय BX, that is called componendo, is equal to dash plus dash divided by dash. यहाँ पे बॉक्स हम लोग को दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, by componendo 3 plus this denominator 2 divided by 2. So here by componendo we use the property that is called componendo. So by componendo we get this step. Now simplify AX plus BX, अगर हम लोग फिगर देखते हैं तो AX plus BX becomes AB. So AX plus BX, this is AB upon BX. This value is, ये सम करो अभी, 3 plus 2 divided by ये 2 as it is. So 3 plus 2 is 5 divided by 2, and this is our statement number 1. यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 दिया. नेक्स्ट स्टेप, आगे का स्टेप दिया है, ट्राइंगल BCA सिमिलर ट्राइंगल BYX. यहाँ पे देखो BCA और BYX, ये जो B है दैट इज द कॉमन एंगल फॉर बोथ BCA और BYX, और एक पेयर हम लोग लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, ट्राइंगल BCA similar triangle BYX by AA test of similarity. तो यहाँ पे आ जाएगा अपना AA by AA test of similarity. And when two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. Therefore BA upon BX, BA upon BX is equal to, what is given, AC upon XY
corresponding sides of similar triangles. Reason is already, this step is already given, but from 1 this AB upon BX, AB और BA सेम, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे 5/2, ये सब्सटीट्यूट करना है हम लोग को यहाँ पे नीचे. सो 5/2 इज इक्वल टू दिस AC अपॉन 9. XY का वैल्यू ऑलरेडी दिया है. सो हियर 5/2 is equal to this one. Then AC is equal to, directly we have to find AC. तो AC is equal to this 9 5 45. यहाँ पे रफ वर्क में हम लोग कर लेते हैं. देखो AC, देखो 2AC अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 9 इंटू 5. सो AC इज इक्वल टू 9 into 5 divided by 2. So 9 5 are 45 divided by 2 यानी 22.5. So AC is equal to 22.5. So in this way we can find the value of AC in this 12th sum. So let us see this 13th sum, last sum from problem set 1. In figure, what is given? The vertices of square DEFG. This is the square. Therefore, this GD is equal to DE is equal to EF is equal to this one, and each angle is of 90 degree because this is square given. So the vertices of the square DEFG are on the sides of triangle ABC. These are on the sides of triangle ABC. Angle A is 90 degree. Then to prove, क्या प्रूव करना है अभी हम लोग को? So first write the given and to prove what we have to prove. This DE square is equal to BD into EC. This DE square is equal to BD into EC, that we have to prove. So here hint is given, show that this triangle which is GBD and this CFE similar. तो ये सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो प्रूफ. So first we have to show this triangle AGF and triangle DBG ये सिमिलर बताना है. First what we have to write? Quadrilateral DEFG is square. In a square opposite sides are parallel. Therefore segment GF parallel segment DE. अगर DE को parallel है तो BC को भी parallel होना चाहिए. Therefore segment GF is parallel to सेगमेंट BC और साइड BC. ये पहले हम लोगों ने प्रूव कर दिया. अगर ये पैरेलल है देन दिस पेयर एंगल AGF और ये GBD ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये पेयर जो है AFG एंड FCE ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया. नाउ इन ट्राइंगल AGF and triangle DBG ये करस्पॉन्डेंस कैसा लिया? देखो A90 D90 तो पहले 90 वाला लिखा. AG और B कॉन्ग्रुएंट है तो G और B बीच में डाला, G और B और बचा हुआ लिखा. सो AGF और DBG. सो इसमें देखो एंगल GAF is congruent to angle
BDG दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और एंगल AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD, दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, एंड देयरफॉर ट्रायंगल AGF becomes similar to triangle DBG। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। विच टेस्ट? A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। नो सेकेंड स्टेटमेंट, सॉरी थर्ड स्टेप नेक्स्ट। अगर सेम हम लोग AGF 90 डिग्री से स्टार्ट किया, ये भी 90 है, और EFC क्योंकि ये F और C ये सिमिलर है, तो लास्ट में F आया तो लास्ट में C लेना है, AGF और EFC। सो इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल EFC 90 से स्टार्ट किया, और जो कॉन्ग्रुएंट है देखो ये F और ये C कॉन्ग्रुएंट है, तो AGF में F लास्ट में आता है, तो यहाँ पे भी हम लोग C लास्ट में रखेंगे। तो in this way we get the correspondence. Here angle GAF 90 degree is equal to FEC 90 degree, each 90, ये एक पेयर हो गया। सेकेंड एंगल AFG is congruent to angle FCE, this is the pair of corresponding angle। ये corresponding angle है because these two sides are parallel। Therefore triangle AGF is similar to triangle EFC। This is second step, and here again A test of similarity। Now observe this step, ये जो है AGF similar DBG, और here we get second result AGF similar EFC। So this A is equal to A is similar to B and A is similar to C, that means ये राइट हैंड साइड जो है ये भी सिमिलर आना चाहिए। ये सेम ट्राइंगल अगर दोनों को सिमिलर है, सो दिस ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर। देयरफॉर व्हाट वी गेट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग अभी? सो AGF सिमिलर दिस वन एंड AGF सिमिलर दिस वन, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ट्राइंगल DBG is similar to triangle EFC। So reason is already here from 1 and 2। From 1 and 2 ये दोनों सिमिलर हो गया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, so they are corresponding sides। इनका corresponding sides भी हमेशा क्या आना चाहिए? In proportion। So here DB means BD, ये पहला पेयर लिया मैं, BD अपॉन EF। So first pair is BD upon EF is equal to, second pair लिया DG, ये देखो लास्ट का, और EC। So DG upon EC, but here reason is corresponding sides of similar triangles। When two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion। But EF मतलब side of this square, DG side of this square, or DE side of this square। So instead of this one and this one, we can substitute DE। तो BD upon DE, because sides are congruent, ये भी side है ये भी side है, तो DE upon EC। Reason, since this EF is equal to DE is equal to DG, ये तीनों है साइड्स ऑफ स्क्वायर।
तो इंस्टेड ऑफ दिस वन वी सब्सटीट्यूट डी ई, और ये इनकी जगह पे भी हम लोग डी ई डाला. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी ई इंटू डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी. सो वी गेट आवर रिजल्ट. So in this way, in 13th sum, we can prove this DE square is equal to BD into EC. So friends, here this problem set 1 of similarity is completed. If you have any doubt in chapter similarity, then you can write in the comment box. I will definitely clear your doubts. Second thing, if you like these videos, then please like and subscribe the channel to get the latest videos, update of the videos, and share these videos to your friends and colleagues. Thank you.